आपने जैसे हमें एक्सप्लेन किया था कि you just can't memorize a word, you have to make use of that word in order to retain it. It's one of my strategy that I have to make things easier for an examiner. So I worked so much on my paper presentation as well. And I still remember 40 minutes passed by and I was still working on my outline. But I had this thing in my mind, okay, I have to complete my essay till conclusion no matter what. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is your host Ali Shahab from National Officers Academy, Islamabad. दुनिया में इंसान हमेशा दो चीज़ों के ताक़ुब में लगा रहता है और ये दो चीज़ें हर इंसान की फितरत में होती हैं. नंबर 1 पीस, अमन, और नंबर 2 खुशहाली. आज अगर दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा फर्स्ट वर्ल्ड की तरफ माइग्रेट हो रहा है तो उनके जहन में यही दो एम्स हैं. अगर वो पाकिस्तान के अंदर है तो किसी अंडर डेवलप सिटी से किसी डेवलप सिटी की तरफ मूव हो रहा है तो उसके पीछे भी यही दो वजूहात हैं. मगर चंद इंसान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ एक तीसरी चीज़ को भी तरजीह देते हैं और वो है रिस्पेक्ट. याद रखें कि इंसान रिस्पेक्ट के ऊपर सब कुर्बान करने के लिए तैयार होता है. इसके ऊपर वो अपनी नींद, वो अपना कंफर्ट, हत्ता के फैमिली को कीमती टाइम देना, वो भी इंसान कुर्बान करता है. ये रिस्पेक्ट वाली कौम ही वो हमारा असल असासा है जो इस मुल्क आगे जाके नाम रोशन करते हैं. यहाँ पे मैं तारुफ कराऊंगा अलीज़ा शकील का, जो कि हमारी स्टूडेंट हैं, जिनके पास बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री करने के बाद बहुत अच्छे करियर प्रॉस्पेक्ट्स थे. पीस भी था, प्रॉस्पेरिटी भी, और हो सकता है एक बहुत अच्छी जॉब बैरून मुल्क भी इनको मैसर आई. मगर इन्होंने इन दोनों चीज़ों पे रिस्पेक्ट को तरजीह दी और इसी रिस्पेक्ट को लेके ये अपनी बिलीफ और अपने हार्डवर्क की बिना पे पहली अटेम्प्ट में CSS क्रैक करने में कामयाबी हुई. इनकी पहली अटेम्प्ट में CSS क्रैक करना इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान वो जगह है कि जहाँ पे आज भी मेरिट्स कंसिडर किए जाते हैं इंसान को कामयाबी की राह पे लगाने के लिए. सो यहाँ पे इस इंटरव्यू में हम कहानी सुनेंगे अलीज़ा शकील की ज़ुबानी और उनसे पूछेंगे कि पहली अटेम्प्ट पे उनका ये बिलीफ कैसे फर्म रहा और उनको किस चीज़ ने ये हमेशा यकीन दिलाया कि उनका हार्ड वर्क उनको पहली अटेम्प्ट में कामयाब करेगा. अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा. वालेकुम सलाम. वेलकम टू नोआ. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. अच्छा अलीज़ा, ज़रा अपने सफ़र के बारे में बताइए. I belong to Pindala Khan Tehsil of District JNM. I was brought up there and all my early education is from there as well. The journey to CSS began when right after my graduation I thought of giving it a try, and it was my first attempt in 2024. So right after my graduation, I remember in 2023 I came to NOA, and from there onward the rest is history. Alhamdulillah, I was able to secure an allocation in my first attempt. माशाल्लाह, वेरी वेल डन. ये बड़ी बात है, अपने फर्स्ट टाइम में जो है ये CSS क्रैक कर लिया है. अच्छा, ये मुझे बताइए, आप ग़ालिबन बैच 343 में थी. तो उस वक्त ये कौन सा महीना चल रहा था? So it was mid-June and the start of July. ठीक हो गया. तो इसका मतलब है कि आपने तकरीबन 6 to 8 मंथ्स जो है इस प्रिपरेशन में स्पेंड किए. कोर्स तो हमारा कवर 4 या 4.5 माह में होता है. असल प्रिपरेशन तो उसके बाद आती है. तो हम जनाब कंपल्सरी से शुरू करते हैं. कंपल्सरी में बताइए कि ऐसे राइटिंग का पेपर को आपने कैसे प्रिपेयर किया, आपने कौन सा एसे चूज़ किया और आपने कितने वर्ड्स जो हैं अपने एसे में लिखे थे? So because I come from a natural sciences background, so it's kind of difficult to know when you get to know that there are so many themes you have to prepare for the essay. So I had that thing in mind, and essay is all about current affairs. I got to know that you have to prepare current affairs, and most importantly, those are the subjects and those are the themes that come into your essay paper. So at that time, AI was one of those topics. So when I was giving my exam, the essay paper, and when I saw that the AI was there, so I was happy. So I attempted AI, the depth of creativity, in my final essay paper, and I think I wrote somewhere around 1800 to 2000 words. And I still remember 40 minutes passed by and I was still working on my outline. But I had this thing in my mind, okay, I have to complete my essay till conclusion no matter what. So I think for the rest 2.5 hours I just
keep on writing my essay. And one thing that I kept in mind, and it was one of my strategy, that I have to make things easier for an examiner. So I worked so much on my paper presentation as well. So that was my strategy. So yeah. अच्छा, ये एसे का पेपर आपने प्रिपेयर करने के लिए कितने मॉक एसेस लिखे थे और कितनी इवैल्यूएशंस करवाई थी? So I think I started from writing paragraphs, the structure of paragraph, and then I jumped on to writing full length essays, and I think I wrote somewhere around 40 essays full length, and I got it evaluated from NOA team. So I think they helped me a lot in pointing out my mistakes, and then I worked on them, and that was it. अच्छा, यहाँ पे जनाब बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी नोवा की इवैल्यूएशन टीम को। वहाँ पे मिस अलीज़ा एंड मिस सहर और जो हमारी सारी टीम है वो बड़ी जो है एक जांफिशानी से जो है आप लोगों की असेसमेंट करते हैं, और उसकी एक वाज़ह मिसाल यहाँ पे अलीज़ा के सामने है कि इन्होंने 40 अपने जो हैं राइटअप्स जो है हमारी इवैल्यूएशन टीम से जो हैं सारे इवैल्यूएट करवाए, और उसका रिज़ल्ट भी अब इसी तरह आपके सामने है। सो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना ये एक वाकई अचीवमेंट है कि अगर आप भी जो है इतने एसेज जो हैं मॉक एक फुल लेंथ जो है मार्क करवाते हैं तो उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली जो है फर्स्ट टाइम में आपको नज़र आएगा। सो दैट वाज ए वेरी वेल पुट स्ट्रेटजी, आई वुड से। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं दूसरे पेपर पे, Précis and composition. Those all thanks to you, sir. All thanks to you. I still remember when I started writing Précis, and you used to give us those small Précis paragraphs in the class, and we used to attempt that. And I still remember when I first tried, it was miserable. It was miserable, and then I took it as a challenge, and I still remember, I think one day you gave us that Précis of attempting tsunami that hit a village, something like that. Exactly. And when I attempted that, you gave me 30 marks, and you mentioned well done over there. I still have that paper back at home, and that gave me so much courage, and I believed in myself even more. I think in this journey there are certain moments which are very close to my heart, and that basically encouraged me that I have to just believe in myself even more, and I can do that. So I think I would relate Précis like extracting the juice from the fruit. You just need to extract the essence and the core, and you just leave the rest, the pulp and the seed beside, which is basically the examples and other decorative stuff that is mentioned in the original passage. So all credit goes to you, sir. All credit goes to you. अच्छा बेटा, ये बताएं, हम लोग क्लास में वोकैबुलरी की भी प्रैक्टिस करते थे। राइट सर। तो वोकैबुलरी आपने कितनी याद की और एग्जामिनेशन में वोकैबुलरी आपकी कितनी करेक्ट थी, या कितना उसने इस पेपर में अच्छा स्कोर लेने के लिए आपका साथ दिया? Sir, as far as vocabulary is concerned, आपने जैसे हमें explain किया था कि you just can't memorize a word. You have to make use of that word in order to retain it. So I think whenever I used to learn a word, I used to relate it into my daily life. So that basically helped me in retaining vocabulary, and reading more and writing more basically helps you to enhance your vocabulary, and that basically helps you in passing those synonyms, antonyms. And I still remember you used to take our tests of vocabulary as well. So that was one of the practice that we used to do. Well done. अच्छा, अगले जो दो पेपर्स हैं इनके बारे में भी ज़ाहिर है प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल पेश आती है। वो हैं करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स। एक तो इनका कोर्स बड़ा लेंथी है। सो करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स आपने कैसे प्रिपेयर किया, और जैसे आप पहले कह रही हैं कि योर एसे पेपर इज़ ऑल अबाउट योर करंट अफेयर्स, वहाँ पे जो है इन दो पेपर्स ने आपकी किस तरह हेल्प की? Right. So I did not that much distinguish between current affairs and Pakistan's affair, because from my experience in 2024 exam, I think nowadays when we look at the past papers of Pakistan affair, pre-partition is you can't see much of the portion from pre-partition era, and it's more of contemporary issues. So if we look at the current affairs syllabus, it is divided into three portions: your domestic affairs, your national affairs, and then you have international questions of international affairs. So I think current affairs में जो main चीज़ and Pakistan affairs में main चीज़ का difference होता है वो थोड़ा सा historical background का addition होता है in terms of when you're attempting Pakistan affairs का question. But when it comes to current affairs, you need to be very mindful of pointing out and writing out the question that is basically asked, rather than just mentioning random things that you know about a particular question. And current affairs and Pakistan affairs में सर मेरी strategy ये थी कि I have to prepare contemporary issues from the Pakistan side, and for the topics that are pretty much that had the high potential of coming into the current affairs paper.
And Sir Fareed really helped. Sir Fareed's lectures, Sir Hassan's lectures, they were really, really helpful. I think my current affairs, the credit goes to both the teachers. I think they made things easier for me, because for me, for my preparation, it was difficult because I had zero conceptual clarity when it comes to topics. When it comes to understanding international affairs and how the world works and how the politics works. So they basically helped me out. So that's how I try to attempt those papers. And the second important thing was that I used to incorporate infographics, quotations relevant to the question. The main thing and the main problem that most aspirants fail is that they write what they know. They do not write with what's been asked in the question. So I think that's very important, that when you're given a paper, you have to first thoroughly analyze what's being asked, and then you have to make an outline that this is the thing that you're going to write. And the second important thing is that time management is one of the things that one should keep in mind, because you've only got 35 to 40 minutes, and what you have retained in the 6 to 7 months, you've got only 35 to 40 minutes to produce in the paper, and not only to produce but to write it in a way that not only substantiate your answer, but also write it in a way that basically beautifies your answer in a way as to fetch some really good marks. So कंटेंट के साथ यानी कि presentation भी उतनी आपने focus की थी. Okay, I think that was my strength when it comes to, because when I was appearing in the test series, so Sir Muhammad Ali Khan used to tell me that aap pass hain, your paper presentation is very good. So that gave me hope that okay, if I have to get some really good marks, I have to not only work on facts and figures but also work on my presentation. And अच्छा, यही सारी स्किल्स जो थी फिर आपने जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर था वहाँ पे भी इसी तरह जो अप्लाई की थी? Yes, GSA is a really good subject when it comes to getting really good marks. You can easily score 80 plus marks. The thing is that you have a 5-mark question, and let's say they ask you a topic. If you are able to incorporate a diagram that is related to the question, it really gives you really good marks. So I think GSA में आपको अपने introduction से लेके you have to mention all the facts and figures that's been asked, and it's all your creativity, it's all your art, how you want to present an answer. It's all up to you. I still remember there was this question that's been asked in the test series. It was about how the fats cause I guess it was related to high LDL cholesterol level, something related to that, and it is one of the leading causes of heart attacks. So how I used to do is that instead of writing the whole paragraph, what I did, I made a diagrammatic overview of how I drew an artery, and then I mentioned that there is this clot of cholesterol and how it narrows down the arteries. Then I made that thing, and that's how basically I attempted. So it basically helped me. तो ये डायग्राम्स बनानी आपने क्या शुरू से सीखी थी या फिर बाद में आपने स्किल डेवलप की? I've been very creative since my childhood. I've been very creative, so I think that helped me throughout my schooling years, and I think I've been through these processes where we have the board examinations, and I think credit goes to them, because in that time our main focus was to present our paper in a very well manner so that we would be able to get good marks. So in the end, it all about marks, because from a Punjab domicile, I think it is very competitive over here when it comes to CSS. ये बड़ी बात है, ना सिर्फ पंजाब डोमिसाइल से आपने फर्स्ट टाइम में पास किया बल्कि एलोकेशन मिली है. ये रियली इट्स एन अचीवमेंट. Alhamdulillah, so I truly feel like a miracle. इट इज़. अच्छा, आ जाते हैं हम इस्लामियात के पेपर की तरफ. इस्लामियात में हालिया आप देखें 2025 का रिजल्ट आया तो बहुत लोगों ने जो है पुअर स्कोर किए. आपने इस्लामियात में किन चीज़ों को फोकस किया था? I think more questions that are being asked in the Islamic studies paper are of applied nature rather than the theoretical questions. So my strategy was to memorize Quranic ayats, and ahadith as well, and I try to incorporate them where they deem suitable. That in this question, for instance, if a question is being asked about terrorism or something like that, so what I used to do is that कि मैंने रसूल अल्लाह की लाइफ से जो एग्जाम्पल्स हैं या जो स्टोरीज हैं where they talk about forgiveness or where they talk about religious tolerance, so I used to quote them in the paper, and that's how I was able to score 45 marks in Islamic studies. Okay, well done.
अच्छा, इस्लामियात आपको गालिबन रज़ा साहब ने पढ़ाई थी? नहीं सर, सर अबू बकर ने. सर अबू बकर साहब ने पढ़ाई थी. And it really helped. I got to know why students fail in Islamic studies. क्योंकि जब हमारी टेस्ट सीरीज की डिस्कशन होती थी, I think that played a very major role कि हमने क्या चीज़ करनी है and क्या चीज़ avoid करनी है in papers. And then when sir used to make the presentation slides in which he used to mention कि ये mistakes हैं, तो वो हम उस टाइम तो बहुत लाइटली इस चीज़ को ले रहे होते थे और हंस रहे होते थे कि ये मिस्टेक्स भी हम कर सकते हैं. बट दैट रियली हेल्प मी कि आपने किस तरह से. मोस्टली ये भी होता है कि समटाइम्स वी फॉरगेट अ कुरानिक आयत और वी मिस द पार्ट दैट इज़ रेलिवेंट टू द आंसर. हम ट्राई करते हैं कि उसको पूरा तरीके से लिखें, लेकिन जो एक एसेंस होता है किसी आयत का जो उस क्वेश्चन में फिट हो रही होती है, शायद हमें वो भूल जाती है, तो वो फिर उस तरह से आपको अच्छे मार्क्स नहीं देती है. सो वी जस्ट ट्राई कि हमें प्रॉपर तरीके से अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करना है विद आयात एंड हदीस. एक्सीलेंट, वेल डन. चलो, कंपलसरी की तो हमारी जो है बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगी और स्टूडेंट्स को आई बिलीव बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा होगा कि उन्होंने एक एक सब्जेक्ट की एक जो कह सकते हैं कि डिटेल्स हैं वो आपके सामने जो है बड़ी ओपनली बयान की है अलॉन्ग विद हर लर्निंग स्ट्रेटजी. सो अब हम बढ़ते हैं जनाब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ. अच्छा बेटा, ये बताइए ऑप्शनल्स आपके कौन कौन से थे? सर माय ऑप्शंस वर पॉलिटिकल साइंस, यूएस हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी एंड पंजाबी. अच्छा, यूएस के पास मैं बाद में आता हूँ, ठीक है. पहले तो पॉलिटिकल साइंस किसने पढ़ाई थी? और इसका तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, कैसे आपने कवर किया? Sir, political science was easy. One of the main reason I was a bit skeptical whether to opt IR or political science. One of my seniors, he's a former student of NOA as well, and he was my senior at NUST. So I went to him. He cleared at that time CSS 2022 Sarafraz saying. So I went out to him and I asked his opinion. So he basically guided me to go for political science because it's doable and somehow it resonates with Pakistan affairs. तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर लें तो आपको प्रिटी मच इट इज़ हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान अफेयर्स एज वेल. सो पॉलिटिकल साइंस इज़ कंप्राइज ऑफ 2 पेपर्स, पेपर ए, पेपर बी. एंड जिस तरह से सिखाया गया था कि जो आपके फिलोसफर्स हैं आपने ट्राई करना है पेपर ए में, वो तो आपने एज इट इज़ उनकी तो प्रेजेंट करना ही करना है, बट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन पेपर बी. सो आई यूज्ड टू मेंशन दोज फिलोसफर्स, देयर रेफरेंसेस इन पेपर बी. So that's how political science was done. So basically, Sir Amir's lectures were really good because he made it so easy to understand the concept of each philosopher when it comes to Western philosophers, when it comes to Eastern philosophers, because the basic thing which really helped me is that once I started attending his lectures, it made it really easy for me that it's a piece of cake, political science, we can do it. See. So his lectures were really helpful. चलो, well done. अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब यूएस हिस्ट्री की तरफ. पहले तो बताएं जनाब ये मशवरा किसने दिया और आपने यूएस हिस्ट्री क्या सोच के रखा? Sir, I had interest in history, so I had to choose one of the history subjects, be it European history or US history. When I looked at the syllabus, from the syllabus point of view, US history was concise and it was really interesting. It was really interesting and it caught my attention, and I thought कि 2023 में hit हुई है, there is a little to no chance कि 2024 में hit होगी. So मुझे मज़ा भी बहुत आया इसको पढ़ के और मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया था. So despite having opinions, जब मुझे लोगों ने कहा कि you should opt European history because you come from a Punjab domicile, so आपका वो भी है तो आप US history ना रखें. But despite that, I think मैंने अपनी ही सुनी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था and मेरा पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था. But you never know. The only thing that is certain about CSS is its uncertainty. Great. So उस केस में शायद US history betrayed us. I think most of the aspirants who opted US history, they have the similar feeling. It betrayed, and it betrayed hard. I think never in a million years I'm gonna ever recommend US history to anybody. Okay. अच्छा, इसके बाद जी फिर क्रिमिनोलॉजी का हमारा सब्जेक्ट है. क्रिमिनोलॉजी किसने पढ़ाई थी और कितने अरसे में आपने कवर की? So criminology is one of the very interesting subject because it's deal with crime and everything, and I think I had interest in that. So criminology को prepare करने में I think it took me like around 20 to 25 days, like basic understanding से लेके laws, the theories and everything. So Sir Zephyr taught us criminology and it was really interesting the way he used to teach us.
So and not only he taught us, but he also let us know how to attempt a question to get maximum marks. So जो theories थी, हमारे questions भी कुछ इस तरह से थे कि हम उन theories को उसमें incorporate करें ताकि हम उसको applied nature का answer दे सकें. So that's how I covered criminology, and same goes for gender studies. Gender studies was taught by Sir Izhar, and the theories that comes in it, so I used to apply them. For instance, we had the question of gender-based violence, so we had multiple theories in that. So when I attempted that question, I still remember I was very happy that my paper went really well because I knew I had put as many theories as I knew back at the time. So that's how. अच्छा, गालबन आपको पता होगा कि सर हुज़ैफ़ा भी और सर इज़ार भी ये हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं. सो मैं वो हमेशा जिक्र करता हूँ. हुज़ैफ़ा साहब का फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें क्लियर किया और बड़ा अच्छा स्कोर उन्होंने ऐसे में लिया. अच्छे स्कोर से मुराद ये कि मैंने इनको जनाब अली मॉक पेपर में दिए थे 40, रिजल्ट में भी 40 ही है. तो अभी तो 40 अचीव कर ले बंदा, बड़ी बात है फर्स्ट टाइम में. दूसरे इज़हार साहब इज़ ऑल्सो वेरी गुड एडिशन टू आवर नोआ टीम, और आप बड़े अच्छे हाई स्कोर रहे हैं. फॉरेन सर्विसेज में जो है आपने एलोकेशन भी ली है, और जेंडर स्टडीज़ में देयर इज़ नो डाउट उनका कोई सानी नहीं है. सो दीज आर आवर 2 पिलर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज़, जिन पे जो है हम वाकई बहुत ज़्यादा जो है रिलाई करते हैं कि इनसे बेहतरीन जो है शायद ही हो सकता है कि कोई पढ़ाए. Exactly, sir. I think I couldn't agree more. I think the way gender studies and criminology is being taught at NOA, I think best of the teachers, I would say, best. अच्छा, इसके बाद फिर गालबन हमारा आखिरी ऑप्शनल रह गया Punjabi. पंजाबी. यस, एनीथिंग, एनी वर्ड अबाउट पंजाबी. So Punjabi is being taught by Sir Reza. The lectures were super fun to attend to. Lectures बहुत मजे के नहीं, होते थे. सिर्फ सुपर फनी थे या लर्निंग भी थी उसमें So कुछ? learning थे because I never had the chance throughout my academic career to learn about Punjabi. And to be honest, one of the main reasons of opting Punjabi is because it's a high scoring subject. नहीं तो आप पंजाबी बचपन से बोल रही थी, लिख रही थी, या यहाँ पे आके सारी सीखी है? So यहाँ पे आके. आपने इससे पहले यानी कि कभी लिखी नहीं थी? No sir, I never had the chance to write. और घर में आपकी मदर टंग क्या है? Sir, Urdu, mostly we speak अच्छा, यानी कि Urdu. बोली भी नहीं है आपने? I mean, in my immediate family, we do speak. I don't, but my family does speak Punjabi. So I understand Punjabi, लेकिन मैं इतनी fluent नहीं हूँ पंजाबी बोलने में या लिखने में. So I had to choose an optional subject. Again, I took some advice. तो उन्होंने कहा कि अगर आप हैं पंजाब से तो you should opt Punjabi because somehow you have to manage things, so ये doable भी है. But it gave me tough time, but I took it as a challenge, and मैंने कहा कि if I'm doing it, so I have to do it with utmost dedication. So that's how I prepared Punjabi. तो कितना अर्सा आपने लगाया पंजाबी पे? So Punjabi, I think from September 2023, I started preparing Punjabi, and it took me a while because I took it side by side with while preparing other optional subjects as well. I think it took me 2 months because it's doable. If somebody has more interest in Punjabi, it's really doable. ये 2 महीने तो बड़े मुनासिब हैं, कोई इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, मगर ये डेडिकेशन साथ लगाया जाए तो फ्रॉम स्क्रैच टू परफेक्शन बदल. I have to write Punjabi के कैसे लिखनी है. So it's been quite a while. I had written Urdu as well. तो वो उस तरह से इतनी आपकी speed नहीं होती है. You have to do 5 questions, whereas in other options you have to write 4 questions. So उस तरह से. But it was doable, alhamdulillah. I think it turned out to be really well. So. अच्छा, चले हमारी ये रेगुलर जो क्लासेस हैं जो रूटीन से हुई 343 बैच के साथ, आपने वो तमाम तर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ट्यूटर्स और वो एक सारा जो है एक अरसा बड़े अच्छे तरीके से आपने यहाँ ब्रीफ कर दिया. इसके बाद फिर हमारी एक पूरी होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए. तो आप टेस्ट सीरीज़ में भी इनरोल थी? Definitely, sir. I joined test series in December 2023. I wanted to see where I stand. तो टेस्ट सीरीज really helped me. सबसे पहले मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो गई बिकॉज बार बार यही बताया जाता है कि यू हैव ओनली 3 hours. तो आपने जो 6, 7, 8 months में आपने अपनी इंफॉर्मेशन रिटेन की होती है, यू हैव ओनली 35 to 40 minutes कि आपने उसी टाइम फ्रेम में उसको प्रोड्यूस करना है. अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. सो टेस्ट सीरीज एक तो आपकी राइटिंग स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं. दे लेट यू नो अबाउट योर लूप होल्स कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. द बेस्ट पार्ट अबाउट NOA टेस्ट सीरीज इज़ दैट the evaluation that's being done by your respective teachers, your mentors, and जिस तरह से वो गाइड करते हैं कि एक तो आपके टेस्ट होते हैं
उसके बाद आपका एक प्रॉपर 3 आवर्स का एक प्रॉपर डिस्कशन होती है जिसमें आपको इंडिविजुअली भी टीचर्स गाइड करते हैं कि आपकी यहाँ पे मिस्टेक है, आपने इसको इस तरह से कवर करना है. So test series is a must thing to do. Every CSS aspirant who wants to secure an allocation, I think mock examinations and test series is the best way to go, because you just feel. ऐसे मेरे केस में ये था कि back during school days when we had our first terms and we had our final terms. So what my mother used to do is that as soon as the syllabus was handed over to us, so my mama used to sit with us individually and she used to discuss that thing. Okay, you have this much time left in your examination and आपने इस तरह से prepare करना है. And one thing she used to do is that she used to prepare a full length paper, and she used to basically, before attempting a real examination, she used to make us go through this at home paper so that we know the feel. So I think that moment eradicated the fear of taking an examination. So यहाँ पे भी जब मैं test series कर रही थी तो मुझे similar feeling आए. The difference was that back at the time, as a kid, I was doing it with my mother, and this time I was doing it with my teachers, and same feedback, बहुत detail में feedback को receive करना, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद था. And I owe it to my teachers, to NOA. I think मेरी success एक सिर्फ मेरी success नहीं है. It's because of the hard work of my teachers and their guidance and everything. थैंक यू वेरी मच बेटा. अच्छा, रिटर्न का स्कोर चले वो हमारा मैनेज हो गया, रिज़ल्ट भी आपका आ गया और आप पास भी हो गई. पास होने की एक डेफिनेटली एक फीलिंग होती है अचीवमेंट की, मगर उससे भी आगे एक बड़ा मरला इंटरव्यू का आ जाता है, और अब तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा है. इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप कितने फोरम्स पे गई, मेरा मतलब है किस किस अकेडमी गई, और हमारी अकेडमी ने क्या किरदार अदा किया? So I only came to NOA. Right from the written preparation all the way to interview, I only joined NOA. I never went to any other academy, because the confidence that teachers gave me right from the written, when I was preparing for my written examination, I think that was enough, and I knew I'm in the best of the hands, and I'm in safe hands. So interview के लिए भी मैंने online session join किया था, and then I gave my mocks at NOA, and that's it. And when I appeared for my interview, it just felt like the similar mock exam. तो मेरे लिए बहुत बहुत आसानी हो गई थी. So that's how my interview preparation went. अच्छा, ये बड़ा इत्तेफाक है कि यहाँ पे हमारे सामने एक और एग्जांपल है जो मुकम्मल नोवा का पैकेज है, यानी कि राइट फ्रॉम प्रिपरेशन, टेस्ट सेशन, इंटरव्यूज, शी हैज़ नेवर बीन टू एनी अदर एकेडमी और एनी अदर फोरम, और कहीं पे कोई मॉक इंटरव्यूज़ इसके अलावा भी आपने नहीं दिए. तो ये एक बड़ा एतमाद है जी हमारे स्टूडेंट्स का कि वो पूरा का पूरा जो है एक CSS का जो पैकेज है उसके बारे में हम पे रिलाई करते हैं. सो लीज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बड़ी तफसील से जो है आपने हमारे स्टूडेंट्स की भी रहनुमाई की है और हमें भी जो है आपने एनलाइटन की है. सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सो डियर ऑडियंस, अब इंटरव्यू के अख्ताम की तरफ हम पहुँच चुके हैं. अलीज़ा की इस सारी स्ट्रगल ने एक बात तो तय कर दी कि इंसान के नज़दीक तरजीहात सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी ना हो, बल्कि रिस्पेक्ट भी उतना ही मैटर करती है. अलीज़ा के पास और बहुत सारे फोरम्स थे जहाँ पे जाके ये मज़ीद करियर में एक्सेल कर सकती थी. वैक्सीनेशन में जो है बहुत ब्रेक थ्रू कर सकती थी, मेडिसिन के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकती थी, मगर पाकिस्तान में लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी इन्होंने अपना सफ़र नहीं रोका. इनके नज़दीक जो फोरम था वो था कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स, और कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के ज़रिए इन्होंने सिर्फ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को जो है एम नहीं किया, बल्कि ये रिस्पेक्ट का जो सफ़र है ये भी अर्न किया. हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में इनको जो जॉब ऑफ़र होती वहाँ पे ये एक बहुत आला मकाम शायद हासिल कर लेती फाइनेंशियली, मगर एक फाइनेंशियल अचीवमेंट के साथ एक मॉरल अचीवमेंट होना ये इंसान को बाकी लोगों से मुमताज़ करता है. और यहाँ पे अलीज़ा ने न सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि मॉरल अचीवमेंट भी जो है हासिल की है. हम इनके इस मॉरल करेज को काबिल तहसीन समझते हैं और मुस्तकबिल में इनकी कामयाबी के लिए मज़ीद दुआ गो हैं. थैंक यू वेरी मच.